Everyone. My name is Garima, and I give you the opportunity of welcoming each one of you to the National Youth Conclave. Thank you very, very much for joining us today. So, ladies and gentlemen, boys and girls, as India presides over G20 Summit in 2023, it marks the beginning of Amrit Kal, a 25-year period starting with the 75th anniversary of its independence on 15th August 2022. The theme for G20, as we all know, is Vasudhaiva Kutumbakam, which means one earth, one family, one future. And we affirm, the theme itself affirms that all humans, animals, plants and microorganisms and their interconnectedness on the planet Earth and in wider universe. As we know that the India's G20 presidency has acknowledged the roles of several engagement groups, Urban 20 and Youth 20 being a part of them. We are here today at one of the first collaborative events between these two engagement groups, the National Youth Conclave, where with great pride and excitement, ladies and gentlemen, I would request everyone to please help me welcome the dignitaries on the dais. Can we please put our hands together as I extend a very warm welcome to our dignitaries on the dais, our esteemed guests, experts, innovators, and I think it's a great morning to see the youth from all over the country. I'm sure we can give a loud round of applause, a thunderous round of applause for the youth of the country that has joined today for the India's biggest youth summit, where we all have come together to discuss some very, very important and pressing concerns and how we can learn from each other in order to make this place a better place to live in. Well, ladies and gentlemen, I would want to start this day with a share. If you may just give me an irshad, Can I have an irshad, please? Wonderful. Since I'm looking at a lot of young faces, that should be a little louder though. तो कहते हैं कि परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं. परिंदों को मंजिलें मिलेंगी यकीनन, ये उनके खुले हुए पर बोलते हैं. कुछ लोग अक्सर चुप रहते हैं जमाने में जिनके हुनर बोलते हैं. आप वो हुनरबाज हैं, आप वो लोग हैं, वो शख्सियत हैं. And I'm sure that we are going to make the most of the day. We are going to turn this day to be a very useful and fruitful day. And we will be starting by seeking the blessings of the Lord Almighty. I'm going to request all the dignitaries on the dais to please light the auspicious lamp as we begin. So ladies and gentlemen, मैं सभी हमारे महानुभाव जो कि मंच पर उपस्थित हैं, आप सभी से निवेदन करूंगी, कृपया आप दीप प्रज्वलन कर इस दिन की शुरुआत करें. Thank you so much, sirs. May I request you all to please take your seats on the dais. So, ladies and gentlemen, boys and girls, with that, we will move on to the felicitation ceremony of our dignitaries on the dais. May I request Sri Hitesh Vaidya, Director, National Institute of Urban Affairs, to please felicitate the dignitaries. We will start with felicitating and welcoming Shri Kaushal Kishorji, Honorable Minister of State, Ministry of Housing and Urban Affairs. Please put your hands together as we extend a very warm welcome to Honorable Minister Sir, Shri Kaushal Kishorji. आपका बहुत बहुत स्वागत sir.
With that, I would request everyone to please help me welcome Shri Anmol Sovit, Chair Youth 20 Secretariat. Welcome, sir. May we now welcome Shri Praveen Chaudhary, Deputy Municipal Commissioner, Ahmedabad, and U20 Sherpa. Welcome, sir. And lastly, ladies and gentlemen, please put your hands together as we welcome Shri Kunal Kumar, Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs. Welcome, sir. Thank you very much, Mr. Rajan. Please take your seat. So now, ladies and gentlemen, let's commence the day. I may request Shri Kunal Kumar, Joint Secretary, Ministry of Housing and Urban Affairs, to please welcome everyone and set the context for the National Youth Conclave. Welcome, sir. Good morning, everyone. It is my great pleasure to welcome Honorable Minister for Information, Broadcasting, Youth and Sports Affairs, Shri Anurag Thakurji, who will be joining us shortly. Honorable Minister of State, Housing and Urban Affairs, Shri Kaushal Kishorji, who is with us here today. Shri Anmol Sovit, Chair of the Y20 Secretariat, Madam Geeta Lochan, Secretary Department of Youth Affairs, who is also joining us virtually, Hitesh Vaidya, Director of NIUA, esteemed guests, winners of different competitions, and most importantly, dynamic young Indians who have come from all over the country. I feel humbled standing before the greatest power on earth, the youth of India. "65% of our country is less than 35 years of age. India is undergoing that sweet phase in the history of a country which is called the demographic dividend, when the population of citizens in the working age group is higher than the population of citizens in dependent groups. This is India's strength. This is what the world is watching out for. It is the power of India's youth. It is your power, my dear friends, which will lead India to achieve its Amrit Kal goals, as has been espoused by Honorable Prime Minister, of peace, prosperity, health and well-being for all. This is a very important year for us. India has the presidency of the G20. The G20 represents countries which are the major developed and major emerging economies of the world. These countries have 2/3 of the world's population, and they comprise of about 80% of the world GDP. Needless to say that this is a very important group of nations for the future of humanity. India's presidency also comes at a very opportune time. We are in the background of coming out of a pandemic like COVID, and we also look ahead to solving existential problems like that of achieving prosperity for all in the background of mitigating the negative effects of climate change and global warming. Aptly, the period from 2020 to 2030 has been called the decade of action. And friends, ladies and gentlemen, it is you, the youth of the country, that has to lead this action. This conclave is a joint endeavor of two of G20's engagement groups, U20 and Y20. The priorities that India has set for itself through the U20 group are as follows. One, to nudge environmentally responsible behaviors in everyone, whether it be individuals, organizations, civil society. Two is to ensure water security for all. Three is to accelerate the frontier on climate finance. Fourth is to celebrate local identity and champion local aspirations.
Fifth is to reinvent urban governance and planning frameworks. And sixth is to catalyze digital urban futures. Friends, you are a powerful force. The right choices made by you today has the potential to bring about a paradigm shift towards more environmentally responsible behaviors. Needless to say, all of these fixed priorities would not be achieved and cannot be championed unless the youth take the leadership role in fulfilling them. The collective voice of the youth can amplify the urgency to ensure that all infrastructure is created with intergenerational equity in mind. It is a fact that youth make our cities more interesting places. It is a fact that they can help make our streets safer and more vibrant. It is the youth who can be the champions of preserving and enhancing local identities. They will take ownership of their localities, their cities, and see that good can reach everyone. The creative and passionate energy of the youth is witnessed in the large numbers of startups and the extraordinary digital innovation that our country is seeing and going through. Isn't it thus obvious that our collective future largely depends on youth? And that's why we are here at this National Conclave, to set the journey for the next 25 years, to think through this role that we have to play over the next 25 years of Amrit Kaal. What we also celebrate today is the commemoration of months of efforts of various teams, initiatives and events. To mention a few, Prajatantra 2022-23 organized by NIUA and Praja Foundation created a platform for the youth to debate on challenges faced by cities in enabling ease of living. It involved close to 5,000 youth directly and 25,000 indirectly. Climate Practitioners India Network, CPEN, with 1,000 plus practitioners spread over 100 plus cities in the country, is trying to create a solutions-oriented engagement platform on climate change. The conclave will also have sessions with showcasing of deeper engagement with academia and leading youth organizations around river projects, which is anchored around the theme of National Mission for Clean Ganga. Smart City and Academia Towards Action and Research, SAR, has been an exemplary work. An initiative of MOA and leading institutions across the country, along with NIUA as the anchor, it involved 15 premier architecture and planning institutions to document 75 key projects and bring in students to come and learn on real-time projects on ground, so that the practical training can be mixed with theoretical training which they undergo in their colleges. The role of youth as champions of sustainable development, as the voices that will shape development paradigms, as users of public spaces, as productive workforce of tomorrow, as innovators and providers of cutting-edge solutions to urban areas, and as custodians of public goods and infrastructure, cannot be understated. It is therefore imperative on urban practitioners like me, like us, and like many of us in this hall and outside, to ensure that the youth is not looked at just like bystanders, but are meaningfully engaged in all our activities. The India Smart Cities and NUDM Fellowships have been such efforts of the Ministry of Housing and Urban Affairs and NIUA that has provided a platform for direct engagement with youth. A lot more of this kind needs to be done. The priorities set by the U20 and Y20 groups have notable similarities. My friend Anmol on the dais will acknowledge that the U20 priority area of encouraging environmentally responsible behaviors aligns with the Y20 theme of climate change and disaster risk reduction and health and well-being for all. Similarly, the U20 priorities of championing local identity and catalyzing digital urban futures is very much in sync with the Y20 priority of the future of works, Industry 4.0, innovation and 21st century skills. We hope that these two groups start their journey in the right earnest through this conclave today, and will also align their final outputs so that the two groups could ensure convergence in the recommendations and establish synergies that can be
that can be the fulcrum of action of both these groups under the G20 umbrella going forward in the future. I will stop here by borrowing words from our Honorable Prime Minister's message. He said, quote unquote, India's Yuva Shakti is excelling in every sphere of activity. With holistic efforts, our government is creating right ecosystems where the energy, enthusiasm, strong intent, and good ideas of our youth power the vision of self-reliant and self-sufficient India. Thank you, Honorable Minister, sir. Thank you, all dignitaries. Thank you, all of you, for gracing this conclave. Jai Hind. Thank you very much, sir, for those encouraging words, everyone. Thank you. Thank you. So now, ladies and gentlemen, boys and girls, we have a very special video message. एक बहुत ही खास message है जो कि हम आपको दिखाना चाहेंगे. We have a special message from Srimati Meeta Rajiv Lochan, Secretary, Ministry of Youth Affairs and Sports. And for this, I would request all of you to please orient your attention to the screen right in the front. मैं आप सबका ध्यान screen पर. Welcome to all gathered here today. Friends, India offers the unique combination of one of the oldest nations in the world with one of the most youthful populations. And India will remain youthful for many decades to come. This gives the youth in India a dual advantage of being the inheritors of an ancient civilization with a very rich cultural heritage, and at the same time having all the enthusiasm and energy that comes from being part of one of the largest economies in the world. The Youth 20 Engagement Group offers an opportunity to the youth in this nation to come together and discuss ideas on themes that are very relevant both for our present and for the future. The 5 themes that have been identified by the Youth 20 group are the future of work, Industry 4.0, innovation and 21st century skills, climate change, peace building and reconciliation, youth in democracy and governance, and health, fitness and sports. In all 5 sectors, India has very considerable accomplishments and many experiences which would be very useful to the world community. The Youth 20 Engagement Group offers a platform for people to come together and share their experiences and discuss how to shape a more inclusive society, a happier society. India is leading the world in building digital public goods. The unique combination of the BHIM app, that is the acronym for the Unified Payments Interface, and Aadhaar has combined to create a huge digital economy in which there are billions of payments that happen every month. India has today over 850 million internet subscribers. India has helped to build a very positive and a sound ecosystem for inclusive economic growth. The Department of Youth Affairs has been working to strengthen this ecosystem and to provide multiple opportunities to youth in this nation for building leadership skills and contributing to nation building. I congratulate the National Institute of Urban Affairs and the Urban 20 Group on this initiative in organizing the National Youth Conclave. On behalf of the Department of Youth Affairs, I offer you our heartiest best wishes. Thank you and Jai Hind. Some topics that will help us develop a more inclusive society, a very, very happy society, and I'm sure that everybody's going to take active part in that. Well, ladies and gentlemen, today as we all are honored by the presence of our Honorable Minister of State, Minister of Housing and Urban Affairs, Shri Kaushal Kishore ji, आपका बहुत-बहुत एक बार फिर स्वागत है. I'm sure that we all are eagerly waiting to hear some valuable words from him. But before I invite him, ladies and gentlemen, to share a few words, I would request Shri Kaushal Kishore ji to please lead the launch of our exhibition at the venue that has works displayed on the first floor from the NMCG student thesis competition.
the Smart Academia and Action Research Program, and Smart Solutions Challenge. So, sir, I would request you, and ladies and gentlemen, we have the exhibition of works done under NMCG, SAR and Smart Solution Challenge that's displayed on the first floor. Thank you very much, sir. And with that, ladies and gentlemen, बारी आती है कि हम सब जिस पल का इंतजार कर रहे हैं, श्री कौशल किशोर जी का एक जोरदार तालियों के साथ स्वागत करें। राष्ट्रीय युवा सम्मेलन में आज हमारे बीच में हमारे महुआ डिपार्टमेंट के संयुक्त सचिव श्री कुणाल कुमार जी, शेरपा हमारे G20 श्री प्रवीण चौधरी जी, डायरेक्टर NIUA श्री हितेश यादव जी, Y20 के जी सचिव Y20 से श्री अनमोल सोवित जी, यहाँ पर उपस्थित हमारे सभी भाइयों और बहनों, आज का जो ये कार्यक्रम है राष्ट्रीय युवा सम्मेलन, ये जैसे कि G20 का आप जान रहे हैं कि हमारा देश इस बार इसकी अध्यक्षता करने का काम कर रहा है। ये गौरव प्राप्त हुआ हमारे देश को, और जो गौरव प्राप्त हुआ उस पर आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने पूरे देश में करीब 56 स्थानों पर इसको G20 का ऑर्गेनाइजेशन किया है, जहाँ विभिन्न देशों से लोग आ रहे हैं और हमारे विभिन्न डिपार्टमेंट अपनी अपनी बात को, देश हमारा कैसे विकसित देश की तरफ बढ़ रहा है, उन बातों का, उन कार्यक्रमों का प्रेजेंटेशन भी जगह जगह पे किया जा रहा है। उसी के तहत जो प्रधानमंत्री जी ने एक बात कही है कि युवा शक्ति के अंदर, यूथ के अंदर बड़ी एक ताकत है, वो कर सकते हैं, मतलब सब कुछ कर सकते हैं, इस देश को विकसित भारत बना सकते हैं, आत्मनिर्भर भारत बना सकते हैं, और जो भी हमारी जरूरत की चीजें हैं उन पर डिस्कस करके, उस पर अध्ययन करके आगे बढ़ सकते हैं। इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने युवा शक्ति को बहुत ज्यादा प्रमोट करने के लिए हम सब लोगों को प्रोत्साहित करने का काम किया है। तो इसी G20 के आधार पर ही U20 और Y20, U20 मतलब अर्बन 20, Y20 का मतलब है यूथ 20, इसको एकजुट करके इस कार्यक्रम को आज यहाँ पर करने का काम किया जा रहा है। भारत एक युवा देश है, विश्व की विशाल युवा जनसंख्या हमारे देश में सबसे ज्यादा है, और युवा जिस तरफ सोचता है, बढ़ता है, अच्छी सोच करके, नई नई चीजों की सोच करके, तो अभी इसके पहले जो कार्यक्रम हमारे यहाँ होते रहे उसमें देखे होंगे कि प्रधानमंत्री जी ने स्टार्टअप योजना शुरू की, स्टैंडअप योजना शुरू की, तो तमाम नए नए स्टार्टअप हमारे यूथ लेकर के आए और एक विकसित भारत बनाने में। तो पहले जैसे कि बहुत मैन पावर यूज की जाती थी नीचे सिविल लाइन में, अब वो स्टार्टअप लेकर के हमारे यूथ जो लेकर के आए, तो उसमें मैन पावर की जरूरत नहीं पड़ती है, अब सीधे सीधे जो है मशीन की जरूरत पड़ती है। ऐसा हमारे यूथ ने बनाने का काम किया। तो कुछ चीजों पर मैं युवाओं के बिंदुओं पर प्रकाश डालना चाहूंगा। मुझे पूरा इस बात का दृढ़तापूर्वक ये विश्वास हो रहा है कि आर्थिक विकास में
योगदान देने वाले उपयोगी युवा कार्यक्रम निर्माण के लिए युवाओं को शिक्षित और सतत आजीविका निर्माण के लिए आवश्यक कौशल से लैस होना चाहिए। मतलब साफ सी बात है, कौशल विकास मंत्रालय का गठन भी आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने किया नए डिपार्टमेंट का। उससे कैसे जो है स्किल का कैसे डेवलपमेंट होगा, उसके लिए ट्रेनिंग देना नौजवानों को और उनको कार्य की क्षमता बढ़ाना और फिर लोगों को इससे रोजगार भी उपलब्ध कराना, इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने सारी योजनाएं बनाने का काम किया है और इसके लिए आपसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं कर सकता। ये सुनिश्चित करना भी महत्वपूर्ण है कि सभी पृष्ठभूमि के युवा भेदभाव, अपमान और नुकसान से मुक्त हो। दरअसल में होता यह है कि घरों में लोग पढ़ने जब जाते हैं तो घर में लोग एक माइंड मेकअप कर देते हैं कि हमारा लड़का या लड़की ये बनेंगे, इंजीनियर बनेगा, डॉक्टर बनेगा, IAS बनेगा, IPS बनेगा, ऐसा बना देते हैं और एक माइंड ऐसा मेकअप कर देते हैं कि सरकारी नौकरी में जाना। ये मैं इस तरह की बातें कह रहा हूँ कि जैसे मुझे ही लोग कहते थे मेरे घर में, माँ बाप, कि भैया हमारा ये बन जाएगा, ये बन जाएगा। लेकिन वो एक माइंड जो मेकअप है वो माँ बाप की इच्छा पे निर्भर होता है, उनकी सोच पे निर्भर होता है और वो जब नहीं मिलते हैं, वहां पर नहीं पहुंचते तो एक व्यक्ति डिमोरलाइज होता है। उस डिमोरलाइजेशन से निकलना है आपको अपनी सोच करना, अपने विवेक का इस्तेमाल करना है कि हमें क्या करना है, कौन क्या चाह रहा है, उसकी इच्छा के अनुरूप नहीं, आप क्या बेहतर कर सकते हो वो आगे निकल करके आपको करना होगा। तभी तो उसमें इंजीनियर्स बनते हैं, डॉक्टर्स बनते हैं, रिसर्च करते हैं और आगे बढ़ करके जाते हैं। उन्हीं से तो भारत आगे बढ़ता है, देश आगे बढ़ता है। तो उन तमाम चीजों से आपको मुक्ति पानी है, निराशा की चीजों से, अपमान की चीजों से, और वो दूसरों को आप इसको मुक्ति दे सकते हैं। आप अपने कौशल का विकास करके लोगों को रोजगार देने का काम कर सकते हैं, जिसके लिए ये कार्यक्रम आयोजित करने का काम किया गया है G20 की तरफ से, अर्बन 20 और Y20। राजनीतिक लोकतंत्र, जवाबदेही और शासन से जुड़े मुद्दों पर युवाओं की भागीदारी और जुड़ाव देश के भावी नेताओं की एक सक्षम पीढ़ी बनाने में मदद करेगा। ये बहुत बड़ी बात है प्रधानमंत्री जी। आपकी सोच कैसी होनी चाहिए? राष्ट्र के निर्माण की सोच, देश के निर्माण की सोच। राष्ट्र का निर्माण तभी होगा, देश का निर्माण तभी होगा जब हम हिंदुस्तान को मेक इन इंडिया की तरफ ले जाएंगे, जो प्रधानमंत्री जी ने नारा 2014 में दिया। जबकि ठीक आजादी के पहले 1947 में नारा आना चाहिए था मेक इन इंडिया का, नहीं आया। हमसे 2 साल बाद आजाद हुआ चीन 1949 में, लेकिन चाइना का नारा दिया और उसने पूरे देश को एकजुट करके सभी को एकजुट किया, यूथ एकजुट हुए, सभी एकजुट हुए वहां पे, और चाइना पूरे दुनिया में आप देखिए हमारे देश को कस्टमर बना के रख दिया। ध्वस्त हुआ जापान 1945 में, जहां हिरोशिमा नागासाकी में बम डाले गए थे, उन्होंने भी मेक इन जापान का नारा दिया और सब एकजुट हुए पूरे लोग, और आज टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में दुनिया में नंबर 1 पे हो गया। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने कहा है कि आगामी 2047 तक जो ये अमृत काल है, आजादी के 100 साल पूरे होंगे, तब तक हमारा विकसित भारत बने। तो विकसित भारत तभी बनेगा जब यूथ, नौजवान इस बात को पूरी तरह सोचेगा कि राजनीति कैसी होनी चाहिए, राष्ट्र के निर्माण की है या केवल विरोध करने की है। लोकतंत्र हमारा मजबूत रहे, हम अपनी बात कहें मजबूती से, लेकिन पॉजिटिव बात, नेगेटिव बात नहीं। और जो भी हमारी जिम्मेदारी बनती है वो जवाबदेही नेतृत्व की होनी चाहिए। इसमें जो शासन से जुड़े मुद्दे हैं उनकी जिम्मेदारी कितनी है और कितना कर रहे हैं, इन सब चीजों की जवाबदेही। और इसके अंदर आप एक सवाल होना चाहिए, ऐसे नहीं ऐसे होता तो और जल्दी हो जाता, कि आपके अंदर एक सोच बननी चाहिए। और अगर ये राजनीति में भी अगर आपकी बेहतर पॉजिटिव देश के निर्माण के, राष्ट्र के निर्माण के, हिंदुस्तान को दुनिया में टेक्नोलॉजी के क्षेत्र में, कृषि के क्षेत्र में, रोजगार के क्षेत्र में, विज्ञान के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में और स्वास्थ्य के क्षेत्र में हम अगर दुनिया में नंबर 1 पे ले जाने में सक्षम हो जाएंगे,
तो समझिए कि आपको जो हमारा देश का जो नौजवान है पूरी दुनिया में नंबर 1 पे छा जाएगा और हिंदुस्तान को फिर से एक हम सोने की चिड़िया बनाने में एक अहम भूमिका निभाने का काम करेंगे। स्वास्थ्य सामाजिक सुरक्षा के लिए बहुत आवश्यक है, आप जानते हैं, युवाओं सहित। अब इसके लिए अगर आप देखें तो एक रिपोर्ट आई WHO की कि पूरी दुनिया में जितने लोग भी हार्ट के पेशेंट है उसमें 60% हार्ट के पेशेंट हमारे हिंदुस्तान में, उसमें से 25 से और 40 साल की उम्र के नौजवानों को 40% हार्ट अटैक की बीमारी है, 40 से 60 के बीच में 25% और 60 से ऊपर जो 35%, यानी सबसे ज्यादा हार्ट अटैक के पेशेंट हमारे देश के अंदर। क्यों है? क्योंकि जो खाने पीने की चीजें हैं उन पर कंट्रोल नहीं है। अभी एक सेमिनार हो रही थी, उसमें सोनिया नित्यानंद जी हैं, डायरेक्टर रही है, और उन्होंने एक अच्छी बात कही उन्होंने कि इससे बड़े पैमाने पे कैंसर डेथ पे उन्होंने बताया 16 प्रकार का कैंसर केवल शराब पीने से होता है और 159 पर आवर व्यक्ति हमारे देश में कैंसर की वजह से मर रहे हैं, जिसमें गले का कैंसर, जीभ का कैंसर, जबड़े का कैंसर, फेफड़े का कैंसर, तंबाकू के ऐसे खाद्य पदार्थ हैं उनके खाने से होते हैं, कोलोन का कैंसर फास्ट फूड खाने से हो रहा है, जंक फूड खाने से हो रहा है, ये सारी ऐसी चीजें हैं। ब्रेस्ट कैंसर भी उन्हीं से हो रहा है। तो उन्होंने इस तरीके से बातें बताई जिसकी वजह से स्वास्थ्य हमारा कैसे ठीक होगा। तो स्वास्थ्य ठीक तब होगा जब हमारा खान पीन जो है अच्छी तरीके से होगा। आज केमिकल युक्त चीजों को खाने में पसंद ज्यादा कर रहे हैं। मैं एक अभी मेरे बच्चे का बर्थडे था, तो एक उदाहरण दे रहा हूँ मैं, 1 मिनट लगेगा। उसमें वो ब्रेड लेके आए, केक लेके आए, उसमें बहुत अच्छा उसमें वो डाला था लिक्विड, तो चमक रहा था। वो शाम को काट तो दिया गया, रख दिया गया फ्रिज में, सुबह उसको खोला, काटा गया तो प्लास्टिक का हो गया, पूरा पकड़ के खींचने वाला हो गया। ये कैसा केमिकल है जो हमारे पेट के अंदर जा रहा है? इसलिए केमिकल युक्त चीजों से आपको बचने का काम करना है। उनसे अगर बचेंगे तो स्वास्थ्य आपका बिल्कुल ठीक रहेगा, अच्छा रहेगा, बेहतर रहेगा। इसी में प्रधानमंत्री जी ने यह भी कहा है कि नशे से हमारे देश के युवा बर्बाद हो गए, और इसके लिए प्रधानमंत्री जी ने 272 जनपदों को चिन्हित करके सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय की तरफ से नशा मुक्त भारत अभियान को शुरू करने का काम किया। इसलिए विकसित भारत बनाना, आत्मनिर्भर भारत बनाना, मेक इन इंडिया के तहत काम करने के लिए नशा मुक्त यूथ बनना जरूरी है। नौजवानों को नशे से दूर जानते हैं कि पहली बार जो है नशा आपको कोई ना कोई कराता है कि टेस्ट करके देख लो, एक बार टेस्ट करो, और टेस्ट किया फिर उसी टेस्ट में फंस गए, तो उससे नशे से दूर रहने का काम करना है। नशे से 20 लाख लोग हर साल हमारे देश में मर रहे हैं। एक बात इसमें समझ लेना कि शराब की पहली दुकान कलकत्ता में एक अंग्रेज ने 1760 में खोली थी। अफीम और गांजा, अफीम और तंबाकू हमारे देश में पुर्तगाली लेकर के आए थे। हमारे देश का नशा नहीं है। जानवर गांजा, भांग और तंबाकू के पेड़ नहीं चलते, लेकिन आदमी खा रहा है। इन्हें तुलना करनी होगी कि हम कहाँ खा रहे हैं। नौजवानों को खास करके मैं बताना चाहता हूँ, इसको ध्यान में रखिए। यूनिवर्सिटीज के तमाम ऐसे कैंपस जहाँ पर हॉस्टल में लोग रह रहे हैं, बड़े पैमाने पर ड्रग्स वहाँ पर जा रही है, और सब 2013 से 2022 तक 9 साल के अंदर 64 लाख टन ड्रग्स हमारे देश में पकड़ी जा चुकी है, आपको बर्बाद करने के लिए, हमारे हिंदुस्तान के यूथ को बर्बाद करने के लिए। इसलिए यूथ को, नौजवानों को ड्रग्स से और नशे से दूर रहने का काम करना है। एक साजिश के तहत आपको फंसाए जाने का काम हमारे देश के नौजवानों को किया जा रहा है, जिसमें जो भी ड्रग्स और नशा बेचता है वो खुद नहीं करता, केवल वो पेडलर है, बेचने का काम करता है। तो स्वास्थ्य में ध्यान देना सबको बहुत जरूरी है। इसीलिए आपको अपनी पहचान भी बनाना, अलग तरीके से खड़े करने का जरूरत है। युवा राष्ट्र का भविष्य है और आने वाले वर्षों में देश के नेता बनेंगे। इसलिए आवश्यक है कि हमारे युवा वर्ग उच्चतम सामाजिक मूल्यों और नैतिक मानकों को अपनाने का काम करे। मतलब हमारा नेता वो नहीं हो सकता जो इसका खुद का अपना चरित्र ठीक ना हो, अपना बेहतर उसका चरित्र हो, चरित्रवान हो, ईमानदार हो और नई दिशा देने वाला हो, देश के निर्माण की दिशा, समाज के निर्माण की दिशा देने वाला व्यक्ति हो, और खुद कोई चीज ऐसा न करता हो
जिसकी वजह से गलत संदेश जा रहा हो, तो मतलब यह कि शराब पीने वाला, नशा करने वाला, गलत चरित्र का व्यक्ति हमारा नेता नहीं हो सकता। आपको नेता बनना है ईमानदार, बेहतर बनना है। ऐसा नेता नहीं बनना है कि शराब की दुकान खोली, एक खरीदो एक फ्री पाओ, ऐसा नेता नहीं बनना। ये ध्यान में रखना, इन चीजों से बच करके रहना है, ये मैं आपसे अनुरोध करना चाहता हूँ इसमें। और लोगों को संदेश देना, तो जितने लोग हैं अपने देश के नौजवानों को बचाने के लिए अपने फेसबुक व्हाट्सएप पेज पर डालना चाह सकते हैं। विकसित भारत बनाने के लिए, आत्मनिर्भर भारत बनाने के लिए G20 के तहत जो कार्यक्रम हम ये कर रहे हैं, U20 और Y20, तो आप लिखिए इसके लिए। शाम को अगर गुड मॉर्निंग गुड नाइट लिखते हैं तो नशा मुक्त गुड नाइट लिखना शुरू करिए। सुबह जो है आप गुड मॉर्निंग लिखते हैं तो नशा मुक्त गुड मॉर्निंग, नशा मुक्त सुप्रभात, ऐसा लिखना शुरू करिए। और इसके लिए ध्यान में रखने का काम करिए। चूंकि मेरा पेपर ले होना है इसलिए मैं ज्यादा समय नहीं लेना चाहता हूँ। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने जो आवास योजना शहरी और इसके लिए कार्यक्रम तय किए हैं, उसमें हमारे प्रधानमंत्री जी पूरे देश को हाउस फॉर ऑल के तहत आवास देने का काम किए हैं। अब तक 1,23,00,000 आवास शहरी क्षेत्रों में मंजूर किया जा चुके हैं। फिर कभी आपके साथ मिलेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम के बेहतर के लिए। आपको बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं इस सफल कार्यक्रम के लिए। लेकिन याद रखना है, विकसित भारत बनाना है 2047 तक। प्रधानमंत्री जी के का जो अमृत काल का ये पीरियड है, आत्मनिर्भर भारत बनाना है और उसके साथ साथ में नशा मुक्त भारत भी बनाना है। इतना ध्यान रखना है। धन्यवाद। जय हिंद। थैंक यू सो मच सर। और हम उम्मीद करते हैं कि सर की कही सभी बातों का हम अमल करेंगे। हम सब एक विकसित भारत, एक आत्मनिर्भर भारत, वही एक नशा मुक्त भारत का निर्माण करेंगे। Well, ladies and gentlemen, I hope that we all are encouraged by those words, those valuable words. And now, quickly, can I request everyone to quickly settle down? No movements, please. Thank you. So, ladies and gentlemen, they say leaders are not born, they are made. And today, in this hall, we majorly have the youth of India, the young blood of India. When I say youth of India, the young blood of India, I was expecting a big cheer from the young blood of India. Can I get a big yay or a big round of applause for you all? Wonderful. And what better than calling on stage, ladies and gentlemen, someone who is cheering the Youth 20 Secretariat of India this year. I request everyone to please help me invite Shri Anmol Sovin, Chair Youth 20 Secretariat, to please fill the youth of India with the right motivation. Come on, I said we have somebody who's going to cheer the Youth 20 Secretariat. Can we have a big round of applause, everyone, for Shri Sovin? Welcome, sir. Thank you, ma'am. Honorable Hitesh Vaidya ji, Chair U20 India, Praveen Chaudhary ji, dignitaries, my dear friends and friends from media. Are you all feeling awesome? If yes, how's the josh? Let me first thank you for joining us for this event. This is a historic movement for India as the G20 presidency is being given to India. And the G20 presidency under the able leadership of our leader Honorable Narendra Modi ji holds immense significance as it comes during the period of Azadi Ka Amrit Mahotsav. इस वक्त साथियों, मैं आदरणीय प्रधानमंत्री जी द्वारा कहे गए 5 प्रण को आप सभी के सामने दोहराना चाहूंगा। विकसित भारत के निर्माण में अपना सहयोग, भारत यानी कि हम और आप,
हमारा योगदान, अपने गौरवशाली इतिहास को बचाना, गुलामी की सोच से बाहर निकलना, एकता और एकजुटता, हर नागरिक को अपना कर्तव्य पालन करना। आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने ये 5 प्रण हम सभी भारतवासियों के लिए कहे और मुझे विश्वास है कि हम इसे पालन करेंगे। साथियों, हमें अपने गौरवशाली इतिहास पे गर्व है। गर्व है ना? बिल्कुल है। नाइस। हमारा गौरवशाली इतिहास, जिसपे हम गर्व से कहते हैं कि हाँ, हम भारतीयों का गौरवशाली इतिहास रहा है। हमारे इतिहास में शहरों का अहम योगदान रहा। मुझे विश्वास है इस सभागार में उपस्थित सभी साथीगण महाभारत की कहानी तो सुनी होगी आपने या देखी होगी। अगर हम महाभारत को याद करते हैं तो पूरी महाभारत की कहानी 2 शहरों के बीच में कही जाती है। पहला हस्तिनापुर, दूसरा कौन सा? इंद्रप्रस्थ। पुरातन काल में भी शहरों का विशेष वर्णन रहा। साथियों, मैं बिहार से आता हूं और बिहार की गौरवशाली इतिहास को जब हम वर्णन करते हैं तो उसमें हमारे शहरों का विशेष वर्णन होता है। द फर्स्ट रिपब्लिक ऑफ वर्ल्ड, वैशाली। The land that gives accounts to the world, Patliputra. Rajgir. The land of peace, Bodh Gaya. बिहार के स्वर्ण काल इन शहरों के आसपास कहे जाते हैं। इससे ये समझा जा सकता है कि हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति शहरों के बीच केंद्रित रही है। और आज जब हमारा देश भारत अमृत काल से स्वर्णिम काल की ओर अग्रसर है तो इसमें शहरों का विशेष योगदान होने जा रहा है। I would like to thank Honorable Hitesh Vaidya ji for organizing this event, the Youth Conclave, and inviting me as the Y20 chair. कोई भी बदलाव हम युवाओं के बिना कल्पना नहीं कर सकते। हम बहुत गर्व से कहते हैं कि हमने स्टार्टअप इंडिया, स्टैंड अप इंडिया, डिजिटलाइजेशन में बहुत अहम कार्य करेंगे। इसकी कल्पना हम युवाओं के बिना नहीं कर सकते। फ्रेंड्स, now it's time to innovate in India, and we will. Y20 इंडिया के अध्यक्ष होने के नाते मैं आप सभी के साथ अपना एक समझ साझा करना चाहता हूं कि G20 ने मुझे ये मौका दिया है कि आज मैं युवाओं के विषय पे बात कर सकूं और उनसे इंटर रिलेटेड इश्यूज पे चर्चा कर सकूं। आज का जो हमारा प्रोग्राम है U20 एंड Y20 यूथ कॉन्क्लेव जो हितेश वैद्य जी ने ऑर्गेनाइज करे हैं, वुमेन 20 के साथ भी हम प्रोग्राम करने जा रहे हैं। हम ऐसे प्रोग्रामों में ना केवल इंटर रिलेटेड इश्यूज बल्कि उनके समाधान पे भी चर्चा करेंगे और समाधान को आगे लाएंगे।
Nowadays, youth are closely related with urbanization. Youth of India are facing towards urban for opportunity for their betterment. But we have many challenges regarding infrastructure, facilities, and also regarding how our cities can best serve youth of India. अगर हम सॉल्यूशन सेंट्रिक बात करें, इस परिस्थिति में भी हम यूथ्स को अलग नहीं रख सकते। जैसे कि मैंने पूर्व में कहा और पूर्व के वक्ताओं ने भी कहा, किसी भी बदलाव की कल्पना हम युवाओं के बिना नहीं कर सकते। और हमारे देश भारत ने पूरे विश्व को ये दिखाया है कि युवा देश विगत 8 वर्षों में एक सक्षम नेतृत्व के साथ क्या कर सकता है। A country that was mocked 8 years before regarding digitalization, and at this time it is leading the world. Many countries are coming to us to learn how we have done the excellent job in digitalization. Digital payments. Friends, that's why I am hopeful that today's program must give an impactful solution. साथियों, अब वक्त है योगदान का। हमारे पूर्वजों ने बलिदान करके हमें गौरवशाली इतिहास के साथ भारत सौंपा। बलिदान का नहीं, अब योगदान का वक्त है। और इस विश्वास के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा कि हमारे युवा साथी, हमारे अग्रज युवा सोच के साथ विकसित भारत को विश्व गुरु बनाने में हम सभी योगदान देंगे। विकसित भारत के निर्माण में हम सभी योगदान देंगे। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देना चाहूंगा। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू सो मच सर। एक बार फिर मैं श्री सोवित जी के लिए चाहूंगी कि जोरदार तालियां हो जाएं। जैसा मैंने कहा कि राइट मोटिवेशन, and absolutely every word I'm sure motivated each one of us in the hall. Well, ladies and gentlemen, as sir said, अब बलिदान का नहीं, योगदान का वक्त है। और उम्मीद है कि हमारी जितनी भी युवा पीढ़ी, जितनी भी यंग जनरेशन, यंग ब्लड विच इज इन द हॉल, वो योगदान आप सबसे मिलेगा। हम सभी कई बातों को अमल में लाएंगे। well, चलिए इसी के साथ आगे बढ़ते हैं। Ladies and gentlemen, it's a matter of great pride for all of us that we have received a special message from the Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji. May I request Shri Hitesh Vaidya ji, Director NIUA, to please kindly share the message with all of us. Please put your hands together for Shri Vaidya ji. Good morning. Dignitaries on the dais, off the dais, and as well as all the participants who have joined us today for this National Youth Conclave. This could not have been a better thing for me, and I feel so privileged, so honored that I am reading the message of Honorable Prime Minister today, who has encouraged and inspired us with his words. I think some of our quotes have already been shared by Kunalji with you, but he has inspired and taken the time to address us how to connect youth with urban. And this Youth and Urban Connect Conclave, which we are celebrating today, is a celebration of youth. So I am reading his message and I start with a quote and unquote. The initiative to host the National Youth Conclave 2023 by National Institute of Urban Affairs in association with Smart Cities of the Ministry of Housing and Urban Affairs and Department of Youth Affairs is commendable. Heartiest congratulations and best wishes to everyone associated with the conclave.
The gathering of young leaders from across the country will facilitate vibrant interactions on the wide gamut of issues. The interactive sessions, presentations, and discussions at this conclave will provide an opportunity to the young generation to experience the spirit and essence of democracy from the close quarters. Blessed with unbounded energy, skills and capabilities, our Yuva Shakti is one of the most important contributions or contributors to the nation's growth story. With the changing times, a whole new world of opportunities has opened up for youth, be it information technology, healthcare, sports or startup. Our younger generation is excelling in every sphere of activity. During the last few years, a vibrant ecosystem has been created to empower our youth. Our steadfast efforts are focused on connecting their hopes and expectations with the collective aspirations of the nation. Our Amrit Kal is an opportunity to fructify our collective resolve to build a glorious, wealth and self-reliant nation. This period is critical for the academic and professional growth of our youth. As our Yuva Shakti fulfills its dreams, the nation will also continue its march towards a bright future. Coming at a time when India has assumed the presidency of G20, I am sure that the Assembly of Young Leaders at the National Youth Conclave 2023 will develop a futuristic, inclusive and humane perspective towards the national as well as global issues. May the conclave succeed in its efforts to foster and nurture young leaders of the future. Greetings and best wishes to all the organizers and participants at the conclave. Unquote. I think it gives us such an encouragement, such an inspiration that the Honorable Prime Minister, the highest officer in the country, is inspiring us. And I think this is not, I'm not reading it because I am a National Institute of Urban Affairs. I think it's your youth power which has asked the national leader to give us a message. So I think we should give a big clap that Prime Minister has taken time and has given his message to us. On this note, I would like to thank Honorable Prime Minister for inspiring us and promise that we collectively will do our best to contribute towards converting aspirations to actions at the ground level. Thank you, sir, for all your for this message. Thank you, Kaushal Kisorji, Shri Anwar Thakurji, who has been, I think, withheld because of the parliamentary exigencies, Shri Kunal Kumarji, Anmol Soviji, and all esteemed partners, professionals, and all the participants who have joined us. I think, thank you for joining us today because of you we could celebrate this festival of youth, and I congratulate all of you. I hope the spectrum of activities during the event will nurture the young leaders with the thought-provoking ideas, innovative solutions, and more avenues to contribute and explore for the next generation to take it forward. Thank you very much. Thank you very much, sir. एक बार फिर हम जोरदार तालियों के साथ श्री राजीव जी का धन्यवाद करेंगे for sharing with us the encouraging and inspiring words from Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji. I am sure with a lot of excitement now, ladies and gentlemen, we are all set to move ahead. And I would request Mr. Lakshit Mittal from Y20 Secretariat to please kindly come on the stage and share a few words about working on the Youth 20 agenda for India this year. Please welcome Mr. Mittal. Ministry of Housing and Urban Affairs Joint Secretary Shri Kunal ji, NIUA Director Shri Hitesh ji, Y20 Chair Shri Anmol Soviji ji, to other dignitaries and all the participants. Namaste and a very good morning.
It is great to start this week amongst this young audience present here. India's youth is educated. India's youth is action-oriented. India's youth is energetic. India's youth is innovative. India's youth is technology-driven. And it is this presence that we bring here this morning. And it is this energy that we bring here this morning. And it is this energy that we aim to channelize through this National Youth Conclave and at Y20. India's G20 presidency comes at a challenging time for the world. Countries all over are facing high inflation, economic stagnation, demographic changes, aging population, and a host of other societal and cultural problems. It is in this paradigm that India's position as the youngest country, as a country with largest youth population, as a country with great economic growth, as a country that is led with political stability, as a country that has innovated immensely in the last one decade, as a country which is leading with a global mindset, as a country which is trying to be inclusive, which is ensuring that the voice of all is ensured. It is this movement that the world looks at India's G20 presidency. Y20 in G20 efforts overall is going out and reaching out to all the youth in the country and around the world to come. Let us know the thoughts, the innovative ideas, and your answers to the various challenges that the world faces. At Y20, we are essentially trying to answer the problems the world faces on 5 themes. 1, health, well-being, and sports. The Honorable Minister earlier spoke about what we should not do in order to promote a healthy lifestyle. India led and ensured that we celebrate International Yoga Day on June 21 every year. The Honorable Prime Minister's guidance, the Honorable Prime Minister's leadership ensured a mass adoption of this great initiative. Yoga is something that has been very integral to a lot of cultures and a lot of countries today. It is with India's vision and India's leadership that this has become possible. The second theme is participation of youth in governance and democracy. It is somewhat surprising that this educated youth is not actively participating in democratic political processes as it should. The voting percentages are slightly on the lower side when we compare the youth and the general voting percentages. It is time that we make smart political choices. We have been led by a very stable government, by a very able leadership in the last 8 years, and it is our responsibility going forward to make that wise choice and continue to elect the smart leadership, the energetic leadership that we see today. The third theme is climate change, which is something that our generation will see the most. Climate change impacts will be seen at our generation. We are the ones who need to ensure that we live a environmentally friendly life. And it is also one of the U20 themes, and it is very important that we see how as we urbanize and as we innovate and as we find new solutions, how they are in tandem with the climatic needs and with the environment-friendly norms. The fourth theme that we are picking up is peace building and reconciliation. The world today is faced with many conflicts. There are inter-country conflicts, there are intra-country conflicts, there are various conflicts at various parts of the world. We need to ensure how these conflicts can be diminished, how differences can be managed diplomatically, politically, and with peace. We need to ensure a society that looks forward, that looks to the future, and grows family, uplifting everyone and without putting anyone down. It is these comprehensive themes that we touch and invite the youth of this country to participate with us at Y20, to share their ideas with us, to lead with us, and to ensure that India's G20 presidency is impactful and is action-oriented. So it is my honor to ask all of you from the Y20 side, and I'd like to thank U20 to help us reach out to this vast audience, to this vast group of leaders, and ensure that we receive
participation from the entire country. We look forward to listening from you. We are open and we are absolutely sure that this year will be the India's year and this decade will be India's decade. Thank you. Thank you, Ms. Mittal. Well, ladies and gentlemen, next we have Manju Rajiv Kanchan, a winner of NMCG. Welcome, ma'am. Hello. Honorable dignitaries on the dais, distinguished guests, and most importantly, the youth for whom we have all gathered here, a warm good morning. It is indeed an honor and humbling experience to be here representing my peers at the National Youth Conclave Y20. So, my experience as a youth, standing here as I look back, I am reminded of a particular instance in class 7th wherein I came across this amazing quote during a summer break. That is, luck is what happens when preparation meets opportunity. At that age, it seemed quite illogical, but now that I look at it, I actually understand the meaning more better. We, as youth, tend to always crib about the unfairness in life, but guess what? Opportunities are always around the corner. It's just a matter of whether you want to take it or not. Be it my stint as the assistant school head girl or as the president of IDEA Innovative Development Center for Education Aptitude Youth Wing, I've had my fair share of roadblocks and speed breakers. Achievements are easily noticeable, but people fail to notice the pile of roadblocks that are there in our way. Well, in my case, choosing to pursue ahead at every opportunity with hard work is perhaps my biggest asset and why I was able to bag the 2 most prestigious Sheikh Hamdan and Sheikh Sharjah Award for Academic Excellence and All-Rounder. 7 years back, if someone had told me I had a chance to win a national level award for architecture and planning, well, that would have been the biggest joke of the century. But today, it is an honor for me to share before you as the flag bearer of winner Reimagining Urban Rivers sponsored Student Thesis Competition Season 1, an initiative of Namami Gange and National Institute of Urban Affairs for my thesis, The Somber Place of a North Tribe, Dolphin Man and Zoonosis. As a former NRI and a CBSE product, my biggest flaw that I notice in the Indian education system is the fact that it prepares us for niche problems but not for life problems. Meaning to say, we all know why Bohr's atomic model failed, but half of us are not prepared for personal finance management. The former is helpful if it's a niche area, but the latter is what we need for our life. Extending the same theory to our field of architecture and planning, I would like to highlight the fact that an academic thesis is successful only if it incorporates the lot of concepts that we learn in theory, and in practice, the more concretized infrastructure, the better the project. But my experience as a budding landscape architect taught me one of my biggest lessons, that solving a problem in an urban environment does not actually require just STPs or a gigantic grid of hardscape. Sometimes it could be as small as going with the flow of water or allowing nature to be as it is with modest alterations. Although a major factor for what I am today is my hard work and my stubborn streak to cross every stone that life throws my way, STC was indeed a game changer for me because I never thought it would be the big ticket to come here and today introduce myself before you all as Miss Manju Rajiv Kanchan, BR MR Landscape, Gold Medalist, and most importantly, Research Associate under Water and Environment Vertical, NIUA. This would not have been possible for a cohort of people that stood beside me, my family, my friends, my professor from SPAB, my mentor from NIUA and MCG who saw the potential in me for winning STC, and my amazing team and professional mentors from NIUA who offered the opportunity to be a part of this amazing institution, and Gangetic Dolphins for being my lucky charm. With this, I take your leave in the glimmering hope that my journey was able to inspire at least one of you here.
And I look forward to an amazing experience at the National Youth Conclave. Thank you. Namaskar and Jai Hind. Thank you, Ms. Kanchan, for those very, very powerful words. I'm sure you've definitely inspired a lot of people here in the hall. Well, ladies and gentlemen, as Sri Vaidya mentioned in his speech, that due to some exigencies, Honorable Minister, Ministry of Youth Affairs and Sport, Sri Anurag Thakur, has been withheld at the Parliament. We shall now break for tea. We would request everyone to please join back at 11:30. We have some very, very interesting sessions lined up. I would like to thank the dignitaries on the stage. Thank you very much, everyone. Please give a big hand to the dignitaries on the dais. And requesting everyone to please take back your seats at 11:30 a.m. Thank you. Which they try to do this kind of social experiment. And as you start seeing that in organizations and when it comes to financial literacy, the proportion of women who are there that cook, they certainly are at a